Okay, guys, so let's start. I hope you can see my screen. You can hear me, all of you. Yes. Okay, so now we discussed virtual machine. Virtual machine के साथ क्या-क्या components बनते हैं. We discussed this. Anyone who has missed those sessions, please go back and watch those videos. And if you still have doubts, we can repeat those sessions. या फिर हम उसको discuss कर सकते हैं. Then step by step, while creating machine, we saw all these options. ये जितने भी tabs है इसको हमने detail में देखा है सबको. That what is this, what comes under basic, region क्या base पे select होता है, availability options, and then disk, networking, management, advanced, tags and review. ये सब हम लोगों ने देखा है. Now we will check a virtual machine which is there already, जो already बनी हुई virtual machine है. We'll see that. और उसके जो left panel में है इसको हम देखते हैं. सबसे ज्यादा टाइम इसी पे जाने वाला है. इसके बाद हमारे टॉपिक्स थोड़े फास्ट एंड फॉरवर्ड हो जाएंगे. मेजॉरिटी टाइम वी आर स्पेंडिंग ऑन वर्चुअल मशीन क्योंकि टास्क काम भी वही होता है. वर्चुअल मशीन बनाने का ही ज्यादा काम होता है. मतलब किसी भी तरह का आपको सपोर्ट में ले लीजिए, किस कहीं पर भी मेजॉरिटी काम यही होता है. ठीक है. सो व्हेन यू क्लिक ऑन अ वर्चुअल मशीन, व्हाट डू यू सी इन एन ओवरव्यू. एंड देयर आर फ्यू ऑप्शंस जो हर रिसोर्स पे एक ही तरह होंगे, जैसे ओवरव्यू, एक्टिविटी लॉग, IAM, टैग्स, और इनफैक्ट ये रिसोर्स वर्चुअलाइजर, विजुअलाइजर एंड इवेंट्स. ये सारी चीजें जो है, बीट स्टोरेज अकाउंट, बीट वर्चुअल मशीन, कुछ भी हो. बाय द वे दिस इज न्यू ऑप्शन, आई हैव नॉट सीन दिस. विल सी क्या है ये एग्जैक्टली. आई थिंक पहले नेटवर्किंग के अंदर एक मैपिंग का ऑप्शन होता था. ये आइकन से तो वैसे ही लग रहा है, बट विल सी दिस. ये चेंज होता रहता है, सो यू डोंट हैव टू मग इट अप. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि अगर आप लेफ्ट से शुरू करते हो स्टार्टिंग से, सो व्हाट डू यू सी. दिस इज द वर्चुअल मशीन. एक वर्चुअल मशीन पे मैंने क्लिक कर रखा है. Yeah, this is my virtual machine. And we have clicked on overview. So if we start from here, from the very first option under overview, we have connect. Now, what do you mean by connect? Connect का मतलब होता है, I'll start the machine meanwhile. और यहाँ पर से you have button to start, you have button to stop, restart the machine. These are working as good as जो आपका hard button होता है ना CPU पे, उस तरह से ये stop, start and restart यहाँ पर. Then we have connect. Connect का क्या मतलब होता है? Simply if I have to log into this virtual machine, what I'll do is I will I will open RDP tool. This is the inbuilt tool of Microsoft, RDP tool, which is called Remote Desktop Protocol tool. I'll copy this IP address. I'll paste it here. I'll click on connect and I'll type my user ID and password. Okay, that's all I'll have to do to connect. This is one method. What if I don't want to copy this, और मुझको डाउट है कि यार ये नाम मैं नहीं कॉपी कर पाऊंगा अच्छे से, और मे बी आई एम यूजिंग दिस मशीन फ्रिक्वेंटली, बहुत ही ज्यादा यूजेज है मेरा इस मशीन का, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा हूँ. सो आई डू नॉट वांट टू कॉपी एंड पेस्ट दिस पब्लिक IP बार बार, अभी ये नहीं करना. सो आई कैन क्लिक ऑन कनेक्ट, आई क्लिक ऑन RDP. तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर अपने आप आ जाएगी. देखो पोर्ट नंबर वगैरह क्या है, एंड यू विल हैव टू जस्ट सेव दिस फाइल. आई विल सेव इट हियर, maybe on desktop. That's it. I have saved. Now I'll see a file here. If you see under desktop, I see a file. I just have to double click here. बाकी वो सारी चीजें, उसका IP वगैरह, you see name, ये मेरे मशीन का नाम है, ये अपने आप ले रहा है. You just have to click connect, type user ID and password, and that's it. You will be connected. So every time you won't have to type your email, your IP address and your other details. You won't have to do that. So that is what your RDP is. Now what is SSH? It is the same thing, बस यहाँ पर RDP में हो रहा है, वहां पर वो there is a software called Putty. I'm not sure किसी ने Linux machine बनाई है क्या. If is there, we can try to RDP to that. बस उसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वो IP ये करना है आपको, जो भी IP अपने copy paste कर रखा है, and click on open, and that's it. You will get user ID page and login page, and that's all you have to do. Now it will not work. Why? It is a Windows machine and I have not opened the port. But Linux machine पे this is what you will have to do. So there are two methods again. एक तो आप यहाँ से पट्टी पे क्लिक करके जाओ, जो हम लोग RDP पे क्लिक करके यहाँ से जा रहे थे, और you download it from here. You download it from here. यहाँ से सब डाउनलोड कर लो तो वो भी उस तरह का कनेक्शन बन जाएगा. ठीक है. Then we have Bastion. Bastion we will read. एक अलग से थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो Bastion will discuss. So this is what we have under overview, the first button. Is it clear?
What are we discussing? We are discussing virtual machine और उसका ये पूरा left blade. So connect button is there. I hope start I don't have to explain, right? Start, restart, and stop. Anyone who doesn't understand? I'm not mocking, guys. I'm seriously asking anyone who doesn't understand कि stop बताने पे exactly क्या होगा. So anyone who did not understand what is stop or want me to explain. See, this is running machine. If I click on stop, deleting and stop is a different thing. If I click on stop, this machine will look like this. Let me show it to you. एक कोई stop machine. I do not want to stop that machine. इसमें हम अभी थोड़ा बहुत practical करेंगे. I hope this is a stopped machine. Yes, it is stopped and deallocated. If you shut down a machine, okay, let me show it to you guys. This is my machine. Okay, it is running condition. I will take RDP now. और ये भी नाम इसी मशीन का नाम है. I can go it by a name or IP. It's one and same thing. And if I shut down this machine from here, shut down. Okay, I'm not disconnecting. I'm shutting it down. Proper machine shutdown kar raha hu main. So what do you think the status will be now? Sorry, what is the status? Yes. What will be the status here now? If I refresh, इस machine का status क्या होगा? Yes, anyone? Sorry, so did you press stop? Sorry, I shut down the machine. I remote logged into that machine and I shut it down. Shut it down. So it will just show stop. Stopped, right? Let me refresh and show it to you. Now it is stopped. And here I have a machine stopped deallocated. So how do I achieve this? How do I get this deallocated wala feature? Difference क्या मैं बताता हूँ. First, tell me how do I achieve this? When you hit stop from the Exactly. From the portal side. Exactly. So when you stop it from here, guys, it means that from here, if you stop it from here, it means that you're deallocating the machine. यहाँ से stop होगी तो वो दिखेगा deallocated, और अगर सिर्फ operating system से shut down होगी तो सिर्फ दिखेगा stop. Now what is the difference? If you stop it only, आप उस hard disk को और हर चीज को उसकी utilize कर रहे हो. I have stopped the machine. Who could tell me the difference? Okay, by the way, just looking at this screen, who could tell me the difference? This is a stopped deallocated machine. Okay, and this is shut down wala stopped machine. What is the difference, guys? A difference which will cost me is difference के बारे में बात कर रहा हूँ. Old batch is not allowed, no, to answer. Sorry? Saying old batch is not allowed to answer, right? Anyone, that's fine, anyone. But we are all learning. उसमें क्या वो नहीं, कोई भी कर दो. आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, किसी के लिए लर्निंग हो जाएगी. Anyone? Looking at the screen. Forget आप learning वगैरह भी छोड़ो. यहाँ पर looking at the screen. Let me see if I can. Okay. बहुत ही ज़्यादा छोटा. I do not have my extended screen today. So yeah. ये है आपका stopped deallocated और ये है आपका stop machine. So the what public is IP is missing. Perfect. The moment I do deallocated, तो जितने भी इसको resources Azure पे use करा ना वो वैसे उनको drop कर देगा. It will ask कि आपको रखना है क्या, but it will deallocate if you don't keep it. So here if you see public IP जो है delete हो चुका है, and the machine which I have just shut down from my operating system, इसका public IP वैसे ही है. मतलब I'm being charged for my public IP. I'm being charged for my other disk जो मैंने save करके रखी है. जो temporary disk आती है machine के साथ, I'm being charged for that also. Because मैंने सिर्फ OS level से shut down कर रखा है. So this is the difference between stopped and stopped deallocated.
Is it clear to all of you? Yes, guys. Anyone who did not understand difference between stop? Forget OS disk. You are being charged for all disk. Even if it is this disk, what you say, your data disk, just because you stopped or stopped deallocated, you're still being charged for them. क्योंकि disk नहीं हटा दी ना आपने. Not only for OS disk, you're being charged for both of them. I'm talking about temporary disk. Storage की size में हम लोगों ने machine size में हम लोगों ने देखा था एक temporary disk आती है उसके साथ, right? उसका हम लोगों को चार्ज नहीं लगेगा. IP है, इसका हम लोगों को चार्ज नहीं लगेगा. तो there are few things इसका हम लोगों को चार्ज नहीं लगेगा. So this is stopped is when you do it from your OS level, stopped deallocated when you do it from your portal. Now what does it mean? Capture. अब ये capture दिख रहा है यहाँ पर, but if I refresh ये grayed out हो जाएगा. What do you mean by this capture? Anyone who can tell me what do you understand by capture? Is it capture, snapshot? Yes, snapshot and image capture. So now let me explain this. Copy, yes, you can see a copy also. If I click on capture, what is it going to do? It is selecting my subscription. It is selecting my resource group. It has selected my region. And if you remember, guys, we select image. Now, what does it say? That do you want to share this capture? The image which I'm going to capture, do you want to share this image for public? So I do not want to do that. Okay. I want to capture it only for myself. Now, after capturing, do you want to delete your existing virtual machine? So no, I do not want to delete my existing virtual machine. This resiliency we'll discuss later. But I think it's self-explanatory. It clearly says that it can be used in any zone, but that is fine. And then I can give a name here. So let's say that I say Tsoft वाली machine जो है मेरा इसका image. That's it. इतना ही नाम देना है मुझको. Tags, you know, all of you, right? Tags हर जगह same है. Review and create. And then create. Now this capture feature, guys, when do you think you can use it? It is a sort of backup. Yes, we'll discuss what all scenarios do we use it for. And in fact, that is my question to you guys. This is a sort of backup. So when do you think you can, but this is not a complete backup. ठीक है, जो regular backup चलता है ये backup नहीं है. इसके अलावा backup हमेशा चलता रहता है. This is a short term backup क्योंकि let's say backup मैंने decide कर रखा है कि that my backup should happen at 5 o'clock every day. अब 5:30 हो गया, 5 o'clock को मेरा ऑलरेडी बैकअप हो चुका है. अब कल मेरा बैकअप होने वाला है, ठीक है. बट आई डू नॉट वांट टू वेट फॉर 24 आवर्स. और उसके बीच में मुझको कोई मशीन में चेंज करना है, छोटे से चेंज करने, अपग्रेड करना है, रीसाइज करना है, कुछ भी करना है. वेयर आई थिंक दैट माई मशीन कैन ब्रेक एज इन चल नहीं रही है, ओएस डाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो उस तरह की कोई भी चीज करने से पहले मैं क्या करूंगा, इसका एक बैकअप ले लूंगा. आई विल कैप्चर दैट इमेज. इमेज कैप्चर में क्या क्या होता है, एवरीथिंग, आपकी डेटा डिस्क, आपका ओएस डिस्क, हर चीज जो है आपकी एज इट इज एक कॉपी बन जाती है आपके मशीन की. And then you can, maybe your development team, your deployment team, they are upgrading something, so they can do it. And once they are done with it, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप उस पर एक हफ्ता रख सकते हो, उसके बाद डिलीट कर दो. And later on, if they think कि नहीं यार कुछ तो goof up हो गया, something is not right, so you can go to that virtual machine's image which you have captured. So this is the image which we have captured, the soft image, and you can create another virtual machine from this. You just have to create, click on here, create. And then same things जो हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, वर्चुअल मशीन का आप नाम दे दो, ये दे दो. इससे क्या हुआ, आपका कोई डेटा लॉस नहीं होगा. ठीक है, यू कैन चेंज साइज वगैरह सब कर सकते हो, बट जो आपका डेटा था वो है वैसा ही रहेगा आपका. Is it clear, guys? Anyone who did not understand? With one image we can create only one, we can create multiple, you can clone to a VM image. And I told you guys just you can share it also. आप अब उसको जो है इस पे मार्केट प्लेस पे शेयर भी कर सकते हो. ये जो सारी इमेजेस है किसी ने शेयर करके रखी है, बट
just you will make sure that before you share, जिस इमेज को शेयर करने वाला होगे आप लोग, उसमें कोई डेटा रखोगे ही नहीं, उसमें सिर्फ ओएस लेवल पे जो भी चेंजेस वगैरह करने होंगे आपको वो करोगे और उसके बाद उस इमेज को शेयर कर दोगे। इसमें कोई पर्सनल डेटा रखोगे ही नहीं आप। यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने देखे थे, all these images, these have been shared by someone. ये किसी न किसी ने शेयर किया है। मार्केट प्लेस में जो इमेजेस यूज होते हैं, इसी तरह से किसी ने मशीन बनाई है और उसमें सारे चीजें वगैरह इनपुट किए, ये सब किया। और ये लोगो वगैरह कैसे आता है, दीज आर सिंपल थिंग्स, ये बहुत बेसिक चीज है, जस्ट वो दिखने के लिए फैंसी है बट बेसिक चीज है ये काफी। एंड देन पीपल दे हैव क्रिएटेड दिस एंड दे हैव शेयर्ड दीज इमेजेस। सो यस, यू कैन क्रिएट मल्टीपल। यहाँ पर ऐसा है क्या कोई कि इससे एक बना लिया तो उसके बाद ये चला जा रहा है? नहीं है, you can create multiple machines. So same happens with your image, the one which you have created. So this is what the capture feature works for. Yes, anyone has any doubt in this capture feature? What are the scenarios would you use, guys? Maybe आप कोई disk add कर रहे हो, कोई disk निकाल रहे हो, RAM बढ़ाने वाले हो, resize करने वाले हो, maybe application team कोई इसमें upgrade करने वाला है, आपका application 1.1 से 1.2 पे जाने वाला है, कुछ भी आप करने वाले हो, before doing that you can capture an image. If something goes wrong, complete जो backup होता है ना, उस backup से चीजें वापस मंगाने में काफी time लगता है। ये बहुत ज्यादा simple होता है, ठीक है? Is it clear, guys? हाँ भाई। Now let me go to that image, the one which I have just captured. Understand one thing, image में आपका सारा data as it is आ गया है, ठीक है? आपके application, आपका data वगैरह कुछ नहीं जाएगा. So let me go to that image first and I'll ask you one question. It must be here in my resource group. This is the image I have captured. Guys, understand one thing, naming convention बहुत help करता है, ठीक है? यहाँ पे जैसे ही ज्यादा हो गया, if you see tags का मैंने बोला है कि एक tag मैंने policy के through लगा रखा है, no matter which resource I create, tag अपने आप आ ही जाता है. Okay, now I'm creating a virtual machine. I can give any name. I'm selecting availability set. So now if you guys, I asked you one question that if a machine is already there, can I add that to availability set? The straight away answer is no. But what is the workaround? You have been working since these many years. क्या आपको कभी कोई ऐसा इशू नहीं आया? Interviewer will ask you, what if there is a client, he says कि मेरी मशीन है यहाँ पर और वो 2 साल से चल रही है. I do not want to delete that machine and create a new one. 2 साल से चलती हुई मशीन को डिलीट करके न्यू करना मतलब उसमें बहुत सारे पैचेस इंस्टॉल करना, बहुत सारे जो है मिडलवेयर इंस्टॉल करना, बहुत सारे .NET जैसा सॉफ्टवेयर यूज करना है, देन उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन को रन करना, उसमें आईपी चेंज करना. इट्स अ ह्यूज टास्क, इट्स अ लॉन्ग टास्क. So someone is saying, why can't you simply make this machine a part of availability set? Why can't you do that for me? And you're saying, no, that option is not available in Azure. But what is the workaround? What does your experience say? So this is what you can explain. If an interviewer is asking, तो interviewer को आप बोल सकते हो कि directly तो possible नहीं है, Azure में कोई ऐसा feature नहीं है, but we can capture an image of that machine and then create a new machine from that image, and while creating, make that a part of availability set. Are you guys getting it? हाँ भाई. Okay, what will happen? Let's say इसमें data disk नहीं आता है, ठीक है? So what will happen to my data disk? How will I get my data disk back? ठीक है, आपका ये solution मुझको पसंद है, आपने कैप्चर कर लिया, सी ड्राइव कैप्चर हो गया, मेरा सारा डेटा बच गया, सब कुछ बच गया. इस डिस्क के साथ मेरे 10 डेटा डिस्क जुड़े हुए थे इस मशीन के साथ. How do you plan to get them back? भाई Sorry, I think we lost you. I can't hear you properly, Jafar, if you're speaking. hello, yeah भाई, we can use the option attach existing disk. Perfect. What about others? Did you guys get it? Yes. Sorry.
Yes, what about Khalid, Juhi, Sumaya? Yes. Shrishti, I think you have joined recently, so I would request you to watch few videos, and then maybe if you have any questions, you can definitely reach to any one of us. Sure, Right? sure. So I hope all of you are getting, right? You'll have to, what you'll have to do, because if you delete that machine, आपका वो disk जो है वैसे ही पड़ा रहेगा, and then you can click on attach existing disk और यहाँ पर वो आपको दिख जाएगी. Now I'm not able to see because maybe there is no unattached disk. How will you detach a disk? Let me go to one virtual machine जिसके ऊपर कोई disk होगा, so we can see it. Or do you have to see it, or did you guys get it? जहाँ से हमने resize किया था वहीं पे उसको detach करने का option है. So instead of resizing, we can detach that from that virtual machine. वहां से detach करके रख देना है, तो वो वैसे ही वहां पर पड़ी रहेगी. I think prod VM1 पे एक disk था आपका, right? राफी भाई? So if here is the disk, if there is one, let me see. Yes, bhai. Yeah. Okay. So how do you detach that? You just have to come here. Okay, this is the icon. You're just detaching the disk, guys. You're not deleting disk. इसका data वगैरह सब कुछ as it is है. बस आपने क्या किया? इसको एक वर्चुअल मशीन से अलग कर दिया. फिजिकल मशीन का अगर आप इमेजिन करो, बस एक डिस्क आपने इसको स्क्रू वगैरह खोल के रख दिए, बट उसका डेटा वैसे ही आपने उसको फॉर्मेट नहीं किया. और लेमैन का एग्जांपल अगर दूं, तो मैंने अपने एक मेमोरी कार्ड आपके एक एंड्रॉइड फोन से निकाल कर अपने साइड में रख दिया, और मे बी यूएसबी विच वाज कनेक्टेड टू योर लैपटॉप. मेमोरी कार्ड ज्यादा सूटेबल एग्जांपल है, विच यू अंडरस्टैंड. आप पिक्चर्स खींच रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और सडनली आपका फोन जो है मे बी पानी में गिर गया, टूट गया, स्क्रीन ब्लॉक हो गई, कुछ हो गया, नंबर लॉक हो गया, लेट्स से सब कुछ है, बट उसका स्क्रीन लॉक हो गया, यू फॉरगॉट द पैटर्न, कुछ हो गया, बट आपके पिक्चर सारे मेमोरी कार्ड में. नाउ यू वांट टू गिव इट टू द रिपेयर वाला गाय जिसको आपको देना है, जो उसको अनलॉक वगैरह कर लेगा, बट यू डू नॉट वांट टू शेयर योर डेटा, और मेन वाली यू वांट टू यूज अनदर फोन, और उसी में आपको ये सब देखना है. सो व्हाट विल यू डू? सिंपली यू रिमूव दैट मेमोरी कार्ड एंड अटैच दैट मेमोरी कार्ड टू अनदर फोन. सेम चीज आपके डिस्क के साथ है. सो यू विल रिमूव इट फ्रॉम देयर एंड यू विल कम हियर एंड यू विल डिटैच इट फ्रॉम दैट मशीन. उससे आप एक नई मशीन बना सकते हो जो आपने इमेज कैप्चर की थी, और यहाँ पर आके उसको आप जो है अटैच कर सकते हो. यहाँ पर आकर उसमें ऑब्वियसली कंडीशंस होगी दैट दे शुड बी इन सेम रीजन. डिटेल कंडीशन हम लोग पढ़ते रहेंगे, बट आई होप यू गॉट इट कि कैप्चर कब यूज होगा. Yes guys, anyone has any doubt about capture? Yes guys, anyone who has an issue of कैप्चर वाला कॉन्सेप्ट? किसी को कुछ नहीं समझ में आया? छोटा टास्क भी कैप्चर का. Create a machine, try to capture an image today, and then you will understand. If you don't understand, then you can ask some questions. See, when you practice, at least you will understand, or no, if not, then you will get questions. Ultimately you will understand. या तो आप खुद करके समझ जाओगे, एटलीस्ट या क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में, तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, तब आप समझ जाओगे. ठीक है. Then we have so as there are no questions, I am assuming this topic is clear to you guys. Then we have delete. It's a simple thing. Delete we have been doing बहुत time से हम delete कर रहे हैं. Who can tell me why these are not checked by default? I mean, I can check them here. Why are these not checked? We need Because to they're stop not them. checked during the. Sorry. These options were not selected at the time of creating the virtual machine. We didn't check. Right guys. Simple. So this is what a delete option is, nothing else. Let me see if I can delete that image which we captured. So this is the image we captured as of now. Click on delete and it started deleted. ये एक इमेज था, इससे कोई affiliated चीजें है नहीं इसलिए, but if you go to virtual machine, if you click on delete, तो कुछ चीजें आपको साथ में पूछेगा that do you want to delete this, do you want to delete this. ठीक है, you can apply force delete, ये सब आप कर सकते हो. So this is what a delete. Refresh, I don't have to explain. Open in mobile phone, ये कुछ नहीं, आप एक ऐप मोबाइल में रख सकते हो, एंड्रॉइड iOS दोनों पे है. Azure का ऐप आप अगर अपनी मशीन
शट डाउन करना भूल गए तो आप अपने ऐप से भी कर सकते हो। CLI, व्हाट इज PS? हु कैन टेल मी? ये PS का क्या मतलब है? PowerShell. PowerShell, यस। कुछ नहीं, यहाँ से आपको कोई कमांड सी, PowerShell इज दैट इजी गाइस, बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पर हर चीज आपको दी, आपको कुछ करना है ना तो PowerShell की कमांड इसने खुद ही दे रखे है। Now if one of you want to create a machine using PowerShell, you can simply come here, PowerShell को open करो, यहाँ से कमांड्स आप स्टार्ट करना है। See, this is how you can do, start AZVM, रिसोर्स ग्रुप का नाम, वर्चुअल मशीन का नाम यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। लेट मी सी, आई कॉपी इट, ठीक है, आई कॉपी इट, और ये स्टॉप मशीन है, ठीक है, एंड क्लिक ऑन PowerShell। इस PowerShell से आप करोगे तो कोई लॉगिन वगैरह नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। फिजिकल मशीन से करोगे तो देन देयर इज अ कनेक्टिविटी, वी हैव सीन दैट इन फर्स्ट वाले वीडियो में था हमारे। आई जस्ट हैड टू कॉपी दैट, वो लिंक मैंने कॉपी किया है। आई मीन whoever, do we have Irfan today? Sorry, okay, so Irfan is not there, he had a few questions related to PowerShell. So anyone has any questions related to PowerShell, you simply learn it from here since VM is generalized. Okay, ये because हमने इसका एक image capture कर रखा है, this error is not only from here, अगर मैं यहाँ से भी इसको ऑन करूंगा ये सेम एरर आने वाला है। This I'll explain it to you later कि क्या होता है और क्या कर सकते हैं हम इसका। But if you don't understand any command, I mean if you don't know any command, you can simply come here और आपको commands यहाँ पर दिखने लग जाएंगे कि how to turn on a machine, how to shut down a machine, ये है आपका ये feedback। I hope all of you understand what is a feedback. Essentials में क्या क्या दिखता है आपका, रिसोर्स ग्रुप का नाम आपको दिखेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम दिखेगा, साइज, we have been discussing this, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्विकली ये कर रहा हूँ। लोकेशन, लोकेशन का मतलब रीजन हुआ। सब्सक्रिप्शन, आई होप ऑल ऑफ यू नो बाय नाउ व्हाट इज अ सब्सक्रिप्शन। पब्लिक आईपी वी हैव डिस्कस्ड। वर्चुअल नेटवर्क, आपका वीनेट और सबनेट यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। चेंज वगैरह यहाँ से हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, दैट विल कम टू हियर, नेटवर्किंग जब पार्ट पढ़ेंगे तब हम इसको ध्यान से देखेंगे, नेटवर्किंग का जब टॉपिक हम लोग ये करने वाले हैं। Okay, then DNS name, I'll explain it to you later. Who understand DNS, it's well and good for them. Who do not understand, I will explain DNS in detail. तो अब DNS का आप ये कर लोगे। Subscription ID, when will you require? It's the same as subscription name or subscription ID. It's the same thing. कई चीजों में आपसे subscription ID पूछेगा, that there you can use it. Wherever it is asking for subscription ID, you can use this ID. From where will you get it? यहाँ पर overview वाले tab में, ठीक है। Then under overview you see properties. Many things are repeated here. Computer name you will see operating system on होता तो थोड़ा health status दिखता, publisher दिखता। Who is the publisher का मतलब क्या हुआ, ये image किसने publish की है, the one which we used here, ये Microsoft ने खुद की है। If I do it, यहाँ पर हम लोगों का नाम दिखाई देगा। इसका कौन सा आपने वर्जन ले रखा है वो यहाँ पर दिखेगा। VM generation कौन सा है ये दिखेगा। You don't have to understand all of these things, so relax about it. Wherever I'm going fast, don't think यार इतना फास्ट चला गया कुछ समझ में नहीं आया। You didn't need to know them. Private IP, I hope you guys clear ये कौन सा सबनेट से आता है, the subnet which we assign, जिस सबनेट में हमको चाहिए उस सबनेट का एक IP यहाँ पर आएगा। Who can tell me quickly कि ये 4 से क्यों शुरू हुआ है? 172.31.0.4, ये 4 से क्यों शुरू हुई है मशीन? Yes. Yes, this is the correct answer because we have some IPs and some usable IP. So usable IP जो है 4 से शुरू होता है हमारा, 0, 1, 2 and 3. 0 किसके लिए बुक होता है? Who can tell me? Yes, yes. 0, 1, 2, 3. I hope you guys are not forgetting things जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं. Network ID 1. Yeah, that's okay. You don't have to remember it, but थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. Yeah. 0 जो है हमारा .0 network address, .1 DHCP, .2 router address, .3 फ्यूचर पर्पसेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट रिजर्व करके रखता है, .55 जो है ब्रॉडकास्टिंग का यूज होगा। तो आपकी मशीन से कोई भी रिसोर्स हमेशा 0.4 से लेकर 254 तक ही बनेंगे। इफ यू यूजिंग दैट सर्टेन पूरा वाला रेंज आप यूज कर रहे हो तो, अगर आप IP ही 28 यूज करो तो 255 पिक्चर में नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा आपका जो भी लास्ट IP है वो। सबनेट हम लोगों ने देख लिया, DNS नेम विल सी,
यहाँ पर आपका रैम, सेम चीजें जो वहां पर बता रहा है ना, साइज को थोड़ा सा इलेबरेट करके बता रहा है यहाँ पर। अवेलेबिलिटी एंड प्लस स्केलिंग, अवेलेबिलिटी सेट है, स्केल सेट है, या वेयर एल्स कैन आई सी दिस? हियर इट इज। ठीक है, तो काफी चीजें रिपीट हो रही है, सो डोंट वरी, इतना बहुत टाइम नहीं लगेगा। नाउ वी हैव, आई होप यू गाइस रिमेंबर, राइट? अवेलेबिलिटी जोन क्या है, स्केल सेट क्या है, आई होप यू नो इट नाउ। इंक्रिप्शन ऑन है या ऑफ है, यू कैन सी। Azure डिस्क इंक्रिप्शन का क्या स्टेटस है, यू कैन सी। डेटा डिस्क, हाउ मेनी डेटा डिस्क दिस वर्चुअल मशीन हैज? 0. राइट, सो यू डोंट हैव टू क्लिक हियर फॉर एवरीथिंग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। इतने पेज पे ओवरव्यू में इतना ही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्टिविटी लॉग क्विकली। एक्टिविटी लॉग में कुछ ज्यादा नहीं है, बस यहाँ पर आप ड्यूरेशन वगैरह देख सकते हो, इसमें पूरी डिटेल्स दिख जाएगी कि ये मशीन बनाई किसने थी, इस मशीन पे आरडीपी किसने किया, इसको अप किसने किया। सी, आई ट्राई टू स्टार्ट दिस वर्चुअल मशीन, फेल हो गया। ठीक है, इसमें आपने कहाँ से, पोर्टल से एक्सेस किया था या पावरशेल से किया था, वो भी चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो इफ यू वांट। इस तरह से, मतलब ये कुछ नहीं है, बस एक्टिविटी लॉग दिखती है इसमें, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी लॉग इसमें दिखते हैं। ये किसने किया था, और सी नॉट अलाउड क्यों नहीं अलाउड था, और क्या एग्जैक्टली क्वेरी रन हुई थी, ऑल दीज डिटेल्स यू कैन सी फ्रॉम हियर। टाइम किसने किया था, कौन सा टाइम जोन से किया था, क्या ऑपरेशन का नाम था, एंड हु डिड इट। तो इस तरह से आप यहाँ से एक्टिविटी लॉग से ले सकते हो। An overview and activity log, it's same for all resources irrespective of the resource. Then we have IAM. Why do we use IAM? To assign which roles? Looking for that term, guys. What is that term? Question हमेशा उल्टा आता है, but I just need to know why do we use IAM? RBAC roles. RBAC, right? RBAC roles. What is the full form of RBAC role? Role-based access Access. control. Right. Sorry, Ahmed. Sorry. That's okay. ठीक है, then activity log हो गया, IAM हो गया, tags we have discussed. I hope all of you understand what are tags by now. Hi, do we have Yogesh? I think Yogesh, no, Yogesh is not there. So Yogesh created these tags, name बना दिया, but he forgot to put values. Maybe he forgot, he did not understand, I don't know. But understand guys, कि सिर्फ नाम से कुछ नहीं होगा, ये तो heading है that you're giving OS Windows 2022. अगर आप यहाँ पर कुछ देते ही नहीं हो, तो इससे क्या डेटा पुल कर पाओगे? राइट, ये तो आपका इनपुट है, ये तो नेम है, इसका वैल्यू भी तो कुछ होना चाहिए, तब आप एक रिपोर्ट को पुल कर बताओगे। इन फ्यूचर लेट्स से इफ यू वांट टू पुल अ रिपोर्ट दैट हाउ मेनी मशीन्स आर देयर विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडोज 2022, तब आपके काम में आएगा कि एक पैरामीटर होगा ओएस जिसका वैल्यू 2022, कितने मशीन्स है उसका रिपोर्ट चाहिए। देन यू विल गेट दैट एक्सेल व्हाटएवर यू सेलेक्ट कि हाँ भाई आपके पास 250 मशीन्स ऐसे है, और होती है गाइस, ट्रस्ट मी, एक लाइव एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा ऐसे मशीन्स होते हैं। सो दैट इज व्हाट अ टैग इज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल वाला ये जो है, कीप प्रैक्टिसिंग दिस गाइस। जितने भी लोग सपोर्ट के लिए ये कर रहे हो ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इससे आंसर हो जाते हैं, बहुत सारे, मतलब इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी और आपके खुद के डाउट्स भी। इफ यू क्लिक हियर, यू विल कम हियर, और यहाँ पर देखो ये बता रहा है कि किस तरह के इश्यूज आप फेस करते हो। हुएवर इज कंप्लेनिंग, ये जो कंप्लेन करता है कि यार वी हैव नॉट वर्कड, हम कैसे बताएं कि कैसे टिकट आता है, यहाँ पर आपको 8 से 10 टिकट की वैरायटीज मिल जाएगी। और ट्रस्ट में इसी तरह के इश्यूज आते हैं टिकट में कि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ वीएम से, परफॉर्मेंस इशू है, वीएम स्टार्ट नहीं हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है, एडमिन गेस्ट लॉगिन, ट्रबल शूटिंग इन डिप्लॉयमेंट, जो भी हो रहा है ये सी दीज मेनी इश्यूज यू हैव। एंड इफ यू स्टार्ट क्लिकिंग ऑन ऑल ऑफ दीज, इस पे आप क्लिक करोगे ना तो ट्रबल शूटिंग भी बताएगा कि देखो वर्चुअल मशीन इज स्टॉप्ड एंड डीएलोकेटेड। यहाँ पर ये पूछेगा कि भाई क्या क्या इश्यूज है, ट्रबल शूट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, मतलब इतना डिटेल में है दैट यू वोंट इवन नीड एनीवन, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। यू गाइस गो थ्रू दिस पोर्टल, इस जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम है ना आप इसके ऊपर स्पेंड करो वंस यू आर गुड विद क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन। सपोर्ट के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहीं से आने वाले हैं, और यहीं से आप ट्रबल शूटिंग सीखते हो, यहीं से करते भी हो। सी हेल्प मी विद साइजिंग, वीएम साइजिंग, यहाँ पर ये अपने आप ही आपको सारी डिटेल्स दे देगा। देखो व्हाट प्रॉब्लम आर यू फेसिंग, अनेबल टू रीसाइज माय वीएम, बिकॉज़ जब आप बोलोगे ना कि ये कर रहे हैं हम साइज कर रहे हैं, इंटरव्यू ये भी पूछ सकता है, ठीक है व्हाट इफ आई एम सेइंग आई एम अनेबल टू resize my virtual machine, तो आप पूछ सकते हो कि क्या एरर आ रहा है, एंड देन यू कैन कम हियर एंड देन यू कैन
read these recommendation and steps कि resize करना है, किसी को downsize करना है, क्या करना है, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है. So this is very helpful, बहुत ज़्यादा helpful है. Whoever is trying for support, ये वाला जो है diagnose and solve problem वाला बहुत ज़्यादा important है guys, ठीक है. So I think it's only 2 minutes left. इसको तो मैं वैसे भी हम लोग नहीं cover कर रहे. I want you guys, each of you to go here and check and work on this. And if you face any problem with this कि इसमें पढ़ने के बाद भी नहीं समझ रहा है, then you come back to me or any one of us in group, and then we'll discuss this in class. VM is not booting, password reset, allocation failure, cannot start or stop VM. Now, like I am facing some problem, अब मेरा VM start नहीं हो रहा है, right? I can come here and check. यहाँ पर error में देख सकता हूँ कि किस तरह का error आ रहा है, stop करने में आ रहा है, start करने में आ रहा है. जैसे जैसे आप करोगे ना, ये आपको फर्दर स्टेप्स देते रहेगा, एंड देन उसके बाद वो फर्दर आपको ये करता रहेगा, गाइड करता रहेगा. सो दिस यू गाइज विल हैव टू डू, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन लेट मी नो एंड देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट. Let me quickly click here. So we have covered overview. It's same for all resources, not only for VM. ActivityLogs same, IAM same, tags same. In fact, ये diagnose वाला भी same है. बस सबके issues अलग अलग हो गए, but what I same से मेरा मतलब क्या है कि इनके अंदर का content same होगा. And then networking. So we'll start networking from tomorrow. Meanwhile, if you guys have any issues with this, please let me know. Okay, guys, I'll stop for today's session unless anyone of you has any questions. Okay, if not, let's stop it, guys. I'll upload the recording in some time, and then if you have any questions, I'll check my WhatsApp also. There are a few questions and I'll reply to them. And meanwhile, you can post your questions in group also. Bye, guys. That's all.